and welcome after a long, in fact, a very long break. So, this is going to be my first long video. I wouldn't say first, but in fact, yeah, it's first since I had deleted all the videos. But then, धीरे धीरे बताऊंगी वो क्यों. अब थोड़ी सीरियस बातें कर लेते हैं. Let's go. Hey everyone, I am Dr. Sneha Sharma and now I can proudly call myself a consultant psychiatrist or rather a consultant neuropsychiatrist. And why a neuropsychiatrist? वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद. So just a brief intro about my education. So I did my MD Psychiatry from the Central Institute of Psychiatry, Ranchi, जिसे psychiatry का मंदिर कहा जाता है. So guys, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट इन 3 सालों में हमारा जो एक्सपोजर होता है ना CIP में टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस, सो उतना किसी भी आई फील इंडिया में और किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है. सो आई कैन प्राउडली कॉल माई सेल्फ अ साइकाइट्रिस्ट नाउ. Without any further ado, let's jump to the real question. Who should take psychiatry? If you are preparing for your NEET PG counselling, आपने सबसे पहले decide करना है कि whether you want a surgical branch or a non-surgical branch. अगर surgical branch चाहिए, so just rule out psychiatry. There's no point of thinking about it. But अगर आपको non-surgical branch चाहिए, so there are few aspects जिन पे आपको ध्यान देना है. Yeah, so I have noted down 5 things which you should focus on before taking psychiatry. So सबसे पहला है work life balance. बहुत लोगों के मुंह से सुनते होगे what is work life balance. मुझे ऐसा work life balance चाहिए. I want to do this, I want to do that, I want to make time for my family, I want to enjoy my life. So definitely, even if you are in your PG residency, so you will be working much less than your fellow pediatrics or medicine PGs, right? And बाकी कंसल्टेंट बनने के बाद तो सबकी लाइफ एक जैसी होती है, whether you do a 9 to 5 job or whether you open your own center, it depends upon you. Number 2 would be patient interaction. So guys, there are different kinds of people, okay? So there are some people who want maximum patient interaction like me. I love talking to my patients. अगर आप मुझे घुमाने ले जाओ, you take me to a vacation, I would rather choose to sit in my clinic and talk to my patients because that's one thing जो मुझे बहुत खुश करता है, right? Like seriously, I just like even when I'm having a bad day, talking to my patients, just seeing them, when I make them feel better, when I make them feel happy, I automatically feel happy. So yeah, patient interactions. देखो अब बहुत सारे ऐसे allied branches हैं जैसे कि पैथ हो गया, माइक्रो, इवन रेडियोलॉजी, जहाँ पे मिनिमल पेशेंट इंटरेक्शन होता है, राइट? आप पेशेंट के आगे नहीं जानते, यू वर्क इन योर ओन केबिन, यू वर्क इन योर ओन ऑफिस एंड पेशेंट के साथ आपका इतना इंटरेक्शन नहीं होता. एंड सम पीपल लाइक दैट. सो सम देयर आर पीपल हु आर वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट, जो कि ऐसे ही रहना पसंद करते हैं. ओके, सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वांट. या बट अगर आप साइकाइट्री जैसा सब्जेक्ट लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़े. आपको बताती हूँ गाइस, लाइक ड्यूरिंग आवर PGT ईयर्स, फर्स्ट और सेकेंड मंथ तक तो ऐसा होता था कि वी यूज्ड टू टेक हिस्ट्री एंड MSc. हमारे वर्कअप में 2-3 घंटे का टाइम लगता था. That used to be so normal, like everybody who would join CIP especially. So वहाँ हमें इतनी detailed history लेनी पड़ती थी. Like you would sit in our chamber and keep writing, talking to the patient. कि patient थक जाता था, but हम नहीं थकते थे. So okay, so that's how our training has been, and that's how every psychiatrist should be trained. Okay, so second point ये हो गया patient interaction. The third and very important point is patience. So
आई डोंट नो, आई हैव हर्ड पीपल से कि यार पेशेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, तुम सीख जाते हो ये वो, बट नहीं, यू नीड टू हैव पेशेंस बिकॉज जो हमारे पेशेंट्स होते हैं ना, जो मेंटल डिसऑर्डर से, मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होते हैं, दे नीड टू बी हर्ड, ओके, दे वॉन्ट कि लोग उनको सुने. And that's why they are coming to you, even though you're not a psychologist, you're a psychiatrist, but you have to play a role of a psychologist. You have to talk to them very patiently and you have to listen to them. That's the key. So मेरे practice में the one thing I have learned is be humble and listen to the patient very carefully, because उनकी आधी problems ना वहीं पे solve हो जाती है. The moment they start trusting you, the moment they see कि हाँ ये डॉक्टर मुझ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, so that moment the rapport builds and then there's no limit guys. तो ये हो गई 3 चीज़ें. Now the fourth thing is about your qualities. So your qualities as a psychiatrist. So मैंने पहले तो बता दिया, you should be a great listener, okay, and next thing you have to be compassionate towards your patient. उसके बिना it's not like surgery या कोई अदर है, चल 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 इधर ऐसे नहीं चलता है psychiatry. Listen, trust me, ऐसे करोगे पेशेंट दोबारा आएगा ही नहीं, ओके. इवन मेरे कुछ पेशेंट्स ने आके मेरे सीनियर्स की शिकायतें करी मुझसे कि मैम वो तो सुनते ही नहीं है, हमें भगा देते हैं, राइट. सो ऐसा नहीं चलता है. यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट. सिंपैथी, एम्पैथी, ये भी आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट योर पेशेंट इज लुकिंग फॉर इन यू, ओके. एंड या यू हैव टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग, बिकॉज अगर आप खुद ही पिघल जाओगे, अगर आप खुद ही like you know, there's a thing called counter transference. So like it's very common among doctors also, है ना, कि not only psychologists, even doctors develop this counter transference, okay. So that's why you have to be emotionally very strong and also very साउंड माइंडेड, बिकॉज अगर आपका ही हिला रहेगा तो आप अपने पेशेंट को क्या एडवाइस दोगे, सही है ना. सो यू हैव, चाहे आप अंदर से पूरे टूटे हो, but when it comes to your patient, you have to be very sound minded. You have to give them the right advice. You don't have to take things personally, and जो भी सही logical advice है, that's what you have to give to them. So I hope these 4-5 points pretty much answer your question. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, बट वो अगले वीडियो में बात करेंगे. तब तक यू वॉच दिस वीडियो एंड डिसाइड whether you really want to take psychiatry or not. I'll see you very soon. Bye bye.